Today we discuss a topic, the plant morphology. It is the 11th class topic in NCERT. The first question is, what is the morphology? You know very well what is the morphology. The study of the external feature or study of the external characters that known as the morphology, and it may be two types. For the plants it is known as the plant morphology, and in animal it is known as the animal morphology. We discuss here the plant morphology, the study of the external character of any plant that known as the plant morphology. तो अच्छा आपने देखा होगा अपने आसपास अलग तरह के पौधे होते हैं. कोई पौधा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई सर्ब होता है. तो वी categorize these plant to three categories: herb, shrub and tree. Herb, so on the basis of the morphology we categorize the plants three main types: herb, shrub, tree. Small plants are known as the herb. The height of these plants is 2 to 3 feet. ऐसा पौधे आप जानते हो, देखे हैं आपने कौन कौन से? ऐसे है धनिया है, पुदीना है, आपके पास और दूसरे प्लांट है, घास है, ये सारी किस्में आती हैं हर्ब्स में. दीज आर द हर्ब्स, स्मॉल. सेकंड इज द शर्ब. व्हाट इज द मीन ऑफ शर्ब? झाड़ियाँ. जैसे आपने सुना होगा बेर की झाड़ी होती है, कैपेरिस होता है, कैर का पौधा होता है. तो दीज आर द medium size and contain the several branches. The medium size and contain the several branches, not a single stem. They contain the more than stems arise from their basic part that known as the shrub. And third one is the tree. Those are contain a trunk, and these are the these are the big plants. It means those plants have a thick trunk and a single stem go upper side aerial form, and then branches are developed, and then fruiting and seed formation are present, that known as the tree. जैसे एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ तो मैंगो ट्री. स्मॉल साइज एग्जाम्पल द ग्रास, मिंट. दीज आर द हर्ब, जिंजीफस and capparis. And big plant like as a mango, neem, they are the plants. So dear students, on the basis of morphology we study the particular plant that known as the plant morphology. On the basis of the external feature हम कहते हैं छोटी पौधा है, घास है, बड़ा है और बहुत बड़ा मोटा बहुत ऊंचा पौधा है, that is the tree. So we divided these three main part of the plants: herb, shrub and tree. In the study of morphology we study the external features of the plant, and these features are include the following parts like as a root, stem, flower, clear? Root, stem, flower, leaf. These are the and fruit. These are the parts: root, stem, leaf, flower, fruits. These are the plants organ we study in this the plant morphology. So the definition according to your book that the study of the
axial feature of the plant organs that is known as the plant morphology. So these are the organs. In morphology, a typical plant, we study the typical plant according to your NCERT. The Brassica plant is given in your book. In this type, a plant is present here like this. This is the soil surface, and this plant contains the leaves. This is a plant that represents the morphology. On the basis of this structure, we recognize that it is plants, and it contains the two types of the parts, the aerial parts and underground parts. The soil surface, this is the soil surface. This is the underground part known as the root part, and this is the aerial part known as the stem. And stem contains the leaves and branches, and each axial side of the leaf, the axillary bud is present. Then this is a structure. So on the basis of the structure, a plant, any type, herb, shrub and tree, we are divided into two main parts, the outer parts, aerial parts, and again the underground parts. This part is known as the stem or aerial system, and known as the root system. Root system, and second is the aerial system, here we can say stem. The underground part, the main function, the absorb the water and minerals for the development of the aerial part, and the aerial part, the stem part, the aerial part, that known as the branches, leaves, axillary buds, flower, fruits, seeds. They contain the aerial parts. So on the basis of morphology, we divide a plant two type of the system, taproot system or shoot system. So we divide a plant on the basis of the morphology. Generally, we divide two parts: root system or shoot system. रूट सिस्टम एंड सिस्टम. तो बच्चों आप सबने प्लांट देखा होगा लाइक दिस. ये एक प्लांट मेरे पास है, आप सभी देखा हुआ है, सब बच्चे जानते हैं आप में से. इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग? ये मेरे पास सोइल सरफेस है, ये मिट्टी के नीचे जो भाग था ये एरियल पार्ट्स है. तो इसको हम क्या कहेंगे? अपर वाले को शूट सिस्टम. क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम. ठीक है, एरियल पार्ट होगा डेट इज शूट सिस्टम. और ये जो मिट्टी के नीचे होगा, ये अगर मिट्टी है ये इसके नीचे होगा, ये मेरा हाथ है, अगर ये सोइल सरफेस है तो इसके जो नीचे होगा ये कैसा होगा? रूट सिस्टम. इट मीन्स वी क्लासिफाई द प्लांट्स इन टू पार्ट, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट, द व्हाट इज द रूट सिस्टम एंड हाउ टू नो द शूट सिस्टम. रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. तो यू नो वेरी वेल, आप हम बात करें any seed like as a pea, a rounded structure, and gram, you know, that is the pea and second is the gram. Clear? So what is the root system? What is the shoot system? When the seed is germinate and it make the two part. We can say in a seed the embryo contain the two main part, that the cotyledon and second is the embryonal axis. आपने देखा होगा जब पानी में चने को भिगोते हैं हम लोग, तो चने के बीज को हम हटाते हैं तो हमारे पास वो खुल जाता है इस टाइप से, और उसके अंदर बीच में एक स्ट्रक्चर नजर आती है. हमें कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको.
यहाँ पर जब ये सीड हम बात करते हैं किसकी, ग्राम की बात करें, तो जब ये सीड्स पानी में भीगने के बाद फूल जाता है तो इसमें हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर आती है लाइक दिस, और इसके ऊपर होता है any type of the seeds, that is a pea seed and is a gram seed. Then seed is germinate, that is seed is swell up, then divided into two parts in dicot plants, and these parts are known as the cotyledon. So in a seed structure, three main structure are present, that is known as the seed coat, second cotyledon, and third one is, this one is known as the amenal axis. We can say like this. Represented by this color, and it is known as the embryonal axis. एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्लियर। आप लोग बादाम खाते हैं, भिगो के खाते हैं ना, तो बादाम जब खोलते हैं तो छिलका निकल जाता है एक, वो तो क्या है, उसका खोल है, सीड कॉट, इट इज अ कॉट, इट इज सीड कॉट। सेकंड नंबर पे जब खोलते हैं तो हमें दो वाइटनिंग स्ट्रक्चर आती है, इसे हम खाते हैं, वो क्या होती है, कोटाडॉन, और बीच में एक जहां वो दोनों जुड़े होते हैं आपस में, वो क्या होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इन डाइकोट प्लांट द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट इन द सेंटर पोजीशन जनरली. So it is the embryonal axis, and this axis contains the two main part like this. This embryonal axis, after the removal of seed coat, हमने seed coat remove कर दिया, that is the cotyledons, and cotyledon, and it is the embryonal axis. This embryonal axis contains the two main parts, plumule and radicle. So students, you know very well that when the seed germinate, a white color structure are come out from the seed. आपने देखा होगा जब चने के बीजों को जो अंकुरित करते हैं तो उसमें एक व्हाइट रंग की स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, सबसे पहले निकलती है, वो क्या है, रूट। कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। दिस व्हाइट स्ट्रक्चर जो होती है, व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। एंड दिस इज डेवलप बाय द रेडिकल। किससे डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है, क्लियर। एंड जो अंदर वाला पार्ट होता है, जब वो रूट ग्रो कर लेती है उसके बाद एक स्ट्रक्चर और निकलती है अंदर से, दैट इज नोन एज द प्लूम्यूल। वो किससे निकलती है, प्लूम्यूल से। उससे क्या बोलते हैं, सीडलिंग। तो जब एक जर्मिनेट सीड होता है हमारे पास, आफ्टर द स्ट्रक्चर हम बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ये एक मेरे पास सीड है साइसर का, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, जो जर्मिनेट होगा, लाइक दिस। दिस इज ए स्ट्रक्चर। आप सबने देखा होगा अपने घरों में जो भी सीड होते हैं उनको जब जब करते हैं, साइशर जो होता है वो कॉमन है, ग्राम जो होता है चना, इसमें ये जो होती है डेट सीडलिंग, क्या कहलाएगी, सीडलिंग। एंड दिस वन इज द रूट, क्लियर। तो सीडलिंग या वी कैन से शूट सिस्टम आर डेवलप बाय द प्लूम्यूल एंड रेडिकल डेवलप द प्राइमरी रूट, क्लियर। अब हम बात करते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। जो इस प्लूम्यूल के नीचे होता है, इट मीन्स ए पार्ट वेयर द कोटाडॉन आर जॉइन, where the cotyledon there is a conjoint point, and the upper side and lower side, the two part are divided in the embryonal axis. That upper part is known as the epicotyle, and lower part upper the radicals that known as the hypocotyle. There are two parts, epicotyle and hypocotyle.
upper part epi, lower part is the hypo. Clear? It is like as a we can say it is a emerald axis and these are the cotyledon. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अगर मैं चौक को एमएल एक्सिस मान लूँ और ये मेरे पास जो हाथ है मेरे ये क्या है कोटिलेडोन है, दिस इज निशन इज प्रेजेंट, इट इज जर्मेटिक सीड, इट इज अपर साइड दैट नोन एज द plumule and it contains the form the shoot system, it contains hypocotyle and it contains develop the fruit system, and this is lower part then known as the hypocotyle and the tip part of the hypocotyle known as the radical, and it develop the root and it develop the shoot. Clear? That is the part. The root system developed by the eminal axis, by the radical. Clear? And shoot system developed by the plumule. Clear? So there is a plant divided into two parts, root system and shoot system. Clear? So firstly we discuss the root system. Root system, it is the underground part of the plant. Clear? Like this, it is the underground part of the plants and it absorbs the water and minerals from the soil for the growing of the plants, growth of the plants. Clear? These root system is again divided in two parts. Root system is divided again two parts. First one is the tap root system and second one is the adventitious root system. What is the difference between the tap root system and adventitious root system? Clearly, when the root is developed by the radicals, we discussed earlier radicals, when the root system is developed by the radical, when the root system is developed by the radical, that is known as the tap root system. And other than radical, when the root are developed other than radical, that is known as the adventitious root system. Clear? When the seed are germinate and the radical is formed, that means the root form, radical is the primary root and this root continue to grow and make a tap root system, that known as the tap root. And other than the tap root, it means any part of the plant, any part like the root, stem, like a branch, like a leaf, other than radical, any part of the plant develop the roots and these roots are known as the adventitious roots, and the system known as the adventitious root system. Clear? For example, ऐसा कैसे हो सकता है? So in this plant, this is a croton plant, it is a croton plant, and in this plant that is the straight root. The tap root is the thick and they are continue to grow and the tip is always the lower side and the upper side is a thick in form. That is known as the tap root system. And other than adventitious root system, in this root system that the roots arise both underground and aerial parts other than radical and adventitious root system. For example, in tap root system, it is the stem like this, it is a aerial part and this is a part of the root and it is contain a lateral roots. These are the lateral roots and these are the main roots and this main root known as the tap root. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मेरे को आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे पास प्लांट है, इसमें देखो ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, इसमें ये जा रहा है, इस पर ये डाडी जैसे संरचना आ रही है आपको, डाडी जैसी हमारी डाडी होती है ना, इससे संरचना नजर आ रही है आपको, है छोटी छोटी साइड में, ये क्या है? लैटरल रूट्स. ये क्या है? लैटरल रूट्स. तो समझ में आया व्हाट डिफरेंस बिटवीन द लैटरल रूट्स एंड मेन रूट्स. एंड इन अदर देन रेडिकल एडवेंटिशियस रूट, द रूट्स अराइज इन लाइक एज ए
lower part of the stem like this, or the root arise by the branches. It is the branches of the any plant from the node region. Life cycle is the again adventitious root. The root arise from the leaves. These are the adventitious root. It is the root. These are the root, and this is the root. So other than radical, these roots are not developed by the radical. These roots are developed by the other than radical, known as the adventitious